record of working as a senior Gen AI solution architect in multiple leading AI startups he had been working. And today he would be presenting us with honor. He's hailing from India, the founder of NLP with Indrajit, his own very startup, and he has 13 plus years of experience in data domain. It's our honor to have you, Indrajit. Thank you for that quick intro, Noor, and thank you so much for having me. And I'm really excited to talk about NLP and LLMs. It's always my favorite topic. And so I welcome all the participants who has joined today evening. And I wish to have all of us together a great learning. So let's keep this session more interactive, and we will try to talk and learn about the exploration of AI. And I would also recommend all of you to be very excited. The more excited you are, the more excited we will be, and the more learning we'll have. Okay, so I think with that, we can get started. All right, and I'll be using my whiteboard or blackboard, whatever you say, down here. So I would look down, and sometimes I look at the screen. This is like where I can see the camera. So don't mind if I'm looking down here. So just wanted to clear some logistics. So all right, I mean, we can begin by some let's break down some of the stereotypes, like whether AI is something that is real, or whether AI is kind of bringing in real opportunities. As you see that there are new jobs are being created, there are different jobs being being seen in the market, right? So definitely AI is creating a new era of jobs and in the tech world, right? And you see that big tech giants are already like building huge models such as like chat GPTs, or we have seen Copilot by Microsoft, right? And there are models like Gemini. Now, if we talk a little bit in depth about NLP, right? Can anyone, I mean, you can put it in the chat, right? So when we say NLP, we say that what exactly means by NLP, right? If we break it down, we have natural language and processing, right? So why do we call it natural? Can it be unnatural? Can it be any other thing? It's called natural because the word is referring to the human languages, right? And the most complex, thing to learn for the computers is the human language, because it is, even for the humans, it is very difficult to understand. For example, if I give a simple example, let's say I saw a bat. A bat can be a nocturnal bird, right? Or it can be a cricket bat, right? All right. So that basically makes the things more like an ambiguous, right? In NLP, this ambiguity is one of the complex problems. So the humans, like when we talk about certain things, we talk about context. So if I say I went to the mountains, right, and I saw a bat, that makes a lot of sense because I'm now giving a context here, है ना? So जब हम context दे रहे हैं, उसके आगे का सेंटेंस, उसके बाद का सेंटेंस, उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि ये इसका मतलब क्या है. आई सॉ ए बैट, है ना, इसका मतलब क्या बनता है. तो to come back to this NLP, right, that's the breaking down it to the complex problems, like let's say complex human languages, to different sub aspects. So we had machine learnings, we have deep learning, and we have language models, and now we can say we have LLMs, right? I'll come to that LLM. We'll deep dive into a little bit of large language models and what it is. But all of these are happening because only to solve one problem, one complex problem. What's that? To understand human language, right? So I just spoke in two languages, English plus Hindi. Let's say somebody is speaking in Urdu, right? Or somebody is speaking in Chinese. If I have to understand all of these languages,
as a human, I need to have that vocabulary. I need to have that knowledge of that language, what exactly each word means. Can we say that if we teach a model to learn about each and every word, a computer to learn about each and every word, what it means, what saw means, what cat means, right? What dog means, all right? It can understand that language, presumably, right? So let's learn that. And this is the process which called as NLP. Is that clear? Why NLP and what is NLP? Now let's deep dive into some of the new things that are coming, like called generative AI. So it is not just processing a language, right? So let's say I said I saw a bat. मैंने एक सेंटेंस कहा, I saw a bat. अब ये जो सेंटेंस है हमारे मतलब ब्रेन में वो प्रोसेस होता है, एंड देन वी गेट टू अंडरस्टैंड दैट, इजंट इट? Right. So we need something that processes that. What is that we can say कि वो एक मॉडल है, और मॉडल में हमने एक सेंटेंस फीड किया, एक कोई लैंग्वेज को फीड किया, उस लैंग्वेज को इस मॉडल ने समझा और उसको ट्रांसलेट किया। सपोज तो अगर मैंने हिंदी में कहा और वो इंग्लिश में आ रहा है, राइट? इफ दैट इज कमिंग इन इंग्लिश, सो दिस मॉडल, इट कैन बी एन एनएलपी मॉडल। अभी के लिए मैं इसको एनएलपी मॉडल बोलता हूँ, or it can be a language model. So for all kind of task in NLP, like translation, summarization, all of these tasks, I can use a model. And now this model can be a deep learning model, a language model, or it can be a large language model. We have been doing this thing from long time. Generative AI has come, let's say 2 years, but we have been already doing this stuff from long time, right? So what exactly is generative AI? Why and how does it different from like calling it NLP? I mean, can we call generative AI NLP? Actually, देखा जाए तो वो NLP ही है, right? हम अल्टीमेटली NLP ही, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं, बट थोड़ा डिफरेंट वे में। अब NLP के 3 पार्ट रहते थे, पहले हम उसको डिस्क्राइब करते थे कि ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग NLU, फिर हम बोलते थे NLI, नेचुरल लैंग्वेज इन्फरेंस, राइट? एंड देन वी हैव NLP विच इज द प्रोसेसिंग पार्ट। तो कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें पहले, लेट्स से उसको हम रिटन में देखते हैं, राइट? वी राइट, वी रीड एंड वी अंडरस्टैंड, isn't it? So if we break down that understanding, inference and processing, ये तीनों चीजें एक लैंग्वेज के साथ हो रहा है, राइट? एंड वी कंबाइन ऑल ऑफ दिस। अभी मान लो we have NLI, we have NLP, and we have NLU. I hope, I mean, it is fine and all of you can understand if I am speaking in Hindi sometimes. I mean, Yes, it's good to have a bilingual language. Yep. okay, thank you so much. I got that feedback from Usama, and so I'm yeah. So but I'm comfortable with anything. So NLI, NLU, and NLP, right? So if you are using 3 different techniques to solve only single problem, that to understand the language, right? अब यहाँ पे कहीं पे भी ना जनरेशन नहीं आ रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जनरेशन, राइट? जनरेशन मतलब अब मैंने कोई लैंग्वेज को समझ लिया, पढ़ लिया, पढ़ने के लिए सीख गए हम, उसके बाद ही हम उसको, अब आपको उर्दू समझ में आता है तो आप एक उर्दू में पोएम लिख सकते हो, राइट? यू कैन राइट ए पोएम इन उर्दू, बट ओनली इफ यू अंडरस्टैंड दैट। अब हम, मुझे कोई बोलता है चाइनीज में पोएम लिखने के लिए, आई कांट, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, राइट? नाउ सो यू नीड टू हैव a processing ability of that language. That means you understand it, you process it, and then you can create something, let's say like a poem, or you can create a paragraph, or you can even read a text and summarize it. तो हम एक ऐसा मॉडल बनाए हैं जो जनरेशन एबिलिटी के साथ, अंडरस्टैंड के साथ जनरेशन एबिलिटी भी रखता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, व्हाट डू वी मीन बाय इट, राइट? So let's say I have something called non-generative, okay? तो generative क्या नहीं है वो पहले समझते हैं। जनरेटिव क्या नहीं है? जनरेटिव तो सबको समझ में आता है, कोई चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट डालोगे, यू विल गेट एन आउटपुट, राइट?
If you say, okay, chat in ChatGPT, can you summarize this paragraph for me, or can you describe about, let's say, tiger, right? It's going to give you a good description about it. वो जो that process is known as generation, right? But अभी मैं ये पूछ रहा हूँ question, what is not generation? If I have a cat and if I have dog, and I am saying that I am trying to predict, let's say I have an image of a cat, right? And then I'm trying to predict what is the animal. So it's a probability. Based on probability, I can predict whether it's a cat or dog. Is it a generation? Right? It is not. So we call it discriminative models. Discriminative, right? So we have a generative models and we have discriminative models. When we are actually classifying stuff or we are doing regression, all those are not really generation. अगर मैं एक कैट का इमेज फीड करता हूं एंड मैं बोलता हूं कि गिव मी ए कैट दैट लुक्स लाइक पांडा, दैट लुक्स लाइक ए पांडा, अभी कैट पांडा जैसा दिखने वाला कैट तो होता नहीं है, तो मैं जेनेरेटिव मॉडल को ऐसा प्रॉम्प्ट डाल के आई कैन जनरेट समथिंग लाइक दैट, इजंट इट? तो वो एक्चुअल में क्रिएटिविटी हुआ एंड दैट इज व्हाट इज जनरेशन. आई मीन इट इज नॉट जस्ट दैट क्रिएटिव वे, बट इट कैन बी एनीथिंग दैट इज, let's say if I give a cat's image and I say that generate two cats images out of it, so those cats are basically doesn't exist, right? So all of us like have seen this kind of images sometime back, deep fake, right? जिसमें हमने देखा था कि किसी के वॉइस किसी का इमेज लेके वो फेक वीडियो बनाते हैं, राइट? फेक वीडियो बहुत वायरल भी होते हैं सोशल मीडिया में. तो वो जो सारे चीजें होते हैं उनमें एक मॉडल था ज्ञान, जिससे ये सारे जो प्राइमरीली जो जनरेटिव वाले चीजें आए ना वो ज्ञान से ही आया है. जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क, GAN. तो मैं ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें अभी हम नहीं सीखेंगे मतलब इसमें, बट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ज्ञान जो है वो एक पायोनियर था टू हैव दिस काइंड ऑफ मॉडल्स दैट ब्रिंग्स जनरेटिव नेचर और द लैंग्वेज मॉडल्स स्पेसिफिकली. ठीक है, तो ज्ञान इंट्रोड्यूस्ड न्यू इमेज जनरेशन, right, out of noise, out of nothing. So basically ज्ञान से हम अगर इंस्पिरेशन लेते हैं एंड वी से कि हमने लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसमें हम टेक्स्ट जनरेशन में आ गए. तो अब मैं ये इसका फंडामेंटल में आता हूँ कि इफ दैट गिव्स यू एन आइडिया कि जनरेटिव क्या है और जनरेशन मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं, तो दैट आंसर्स यू व्हाट इज जनरेटिव एआई. अब मैं थोड़ा रियल एग्जांपल्स देता हूँ कि इट्स बेसिकली अ डीप लर्निंग मॉडल दैट ऑफन use large language model or diffusion models trained on huge data set. So obviously these models are not generating out of the blue, right? It has been trained with lots of data, lots of data, and then it's able to do some realistic image generation, code generation, complaining, like you want to complete a email. Let's say I say like I want to write an email to my boss for sick leave, right? So it's going to complete that. So that's chat completion or text completion, music, video, or design generation. Okay, so that answers what is generative AI. Let me know if any questions in the chat. If you are good, then thank you. We can go ahead, or I can take the questions later. Okay, we have only one Yeah, question. we can take the question. Yeah. Yep. And why generative AI is so popular now? There are three things that actually revolutionized the whole process, isn't it? तो अभी 4-5 साल पहले और 10 साल पहले क्या प्रॉब्लम था कि मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे ओपन एआई है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इनके पास दे हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? सो दे आर ट्रेनिंग दिस मॉडल्स फॉर सेवरल डेज on lot of GPUs and they are able to get a trained model. वो ट्रेंड मॉडल क्या है? बेसिकली एक इंसान को अगर 20 साल लग जाते हैं कोई लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझने में, है ना, तो हम अगर मशीन को सिखाना चाहे तो हमें उनको कुछ दिन तक तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा ना. तो हम अगर उनको एक हफ्ता, एक महीना, 4 महीने तक ट्रेन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स चाहिए. तो हम उनको क्लस्टर में डालते हैं एंड देन वी ट्रेन विद लॉट्स ऑफ डेटा. वो डेटा क्या है? मतलब हमारे जनरेट किए हुए ही डेटा है, ह्यूमन जनरेटेड डेटा. जैसे हमने वेब में बहुत सारे ब्लॉग लिखे हैं, वेब में रेडिट के पोस्ट हैं, स्टैक ओवरफ्लो है, बहुत सारे कोड है, इमेजेस है, राइट? सो वी कैन टेक ऑल ऑफ दो स्टफ
and we can prepare a data set and we can feed into a ML model. We can feed into a machine learning model, deep learning model, whatever you say. And for large language models, it is a huge transformer network. So we use a transformer library to feed in so much of data, trained with several days on a GPU cluster. That's where you actually prepare a trained model. ठीक है? तो ये popularity इसलिए हुआ because we got model sophistication. That means we got very good quality models that can take care of these processing of data. We also see a data growth. That means we have, as a social media user, as a web user, as a internet user, we have created so much of data, and we are actually, as a human, we are generating more and more data every day, right? So we have more data now. And also we have seen ML industrialization. That means using these technologies and putting into a cluster, using and basically ML ops and all those stuff, right? So that actually brought in these models. ठीक है? So I think so far so good. बहुत boring नहीं है ना? मतलब जी, it's interactive. You are explaining the with the example. काफी which समझ आ part? रही है. Sorry, Usama. मैं कह रहा हूँ आप काफी अच्छा समझा रहे हैं with examples, तो we get your point कि क्या क्या चीजें किस तरह से. Thank you. Okay. No, just keep me in check, because if I am sometimes going ahead or going fast or not understanding. Okay, so from here we got to know about why generative AI and generative AI क्या है ना? अब हम समझते हैं कि LLMs क्या होता है, क्योंकि हमने शायद चार्ट जीपीटी जो भी है बहुत देखा है हमने ना, राइट? बहुत सारे लोगों ने टी स्टॉल भी खोला है, उसमें चार्ट जीपीटी लिखा है, तो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है ये सारे। तो बेसिकली बट LLMs जो वर्ड है वो थोड़ा लेस नोन है, बिकॉज ये LLMs अभी अब जो काम कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो लोग नए हैं इस एरिया, इस डोमेन में ना, दे डोंट नो अबाउट LLM और लैंग्वेज मॉडल्स एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. So if I have to dissect large language and model, let's understand that part little bit later. ठीक है? Large language and model. मैं generally ये technique I always use for NLP की NLP में का मतलब क्या है, LLM का मतलब क्या है, और उससे ही हमें 50% आइडिया लग जाता है ना? तो अभी मैं ये उससे पहले एक चीज बताते हैं कि हाउ डू वी जनरेट टेक्स्ट. तो हमने बताया कि ठीक है, जनरेटिव एआई इज ऑल अबाउट जनरेटिंग न्यू टेक्स्ट. हाउ डू वी जनरेट टेक्स्ट? तो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन. अगर if I have a word, right, if I have a word something like I and saw, क्या मैं इन दोनों वर्ड के बेसिस पे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? एज ए ह्यूमन हमें पता है कि आई सॉ के बाद हम जनरली ए यूज करेंगे या फिर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, राइट? तो मैं लिख सकता हूँ आई सॉ ए गर्ल. ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूँ. तो ए मॉडल कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, और एज ए ह्यूमन ऑल्सो वी कैन प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन तो बेस्ड ऑन 2 वर्ड्स आई कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, बेस्ड ऑन 3 वर्ड्स आई कैन प्रेडिक्ट द 4th वर्ड. तो सपोज आई हैव अ सेंटेंस कि ऐसा है कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ही इज गोइंग टू ऑफिस. ठीक है, तो मैं अभी ये ऑफिस वाला वर्ड हटा देता हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि इसको प्रोबेबिलिटी में डालता हूँ, पी ऑफ ऑफिस गिवन ही इज गोइंग टू. तो पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई. अगर मैं आपको बोलूं कि यही लैंग्वेज मॉडल है तो यू विल से कि व्हाट आर यू टीचिंग मी, बट बिलीव मी, दिस इज द लैंग्वेज मॉडल. P of x given y. There was a famous joke that was running around. I mean, it's not joke for Sam Altman, but it's a joke for all over the world that a company who makes a model that can predict next word can't predict when its CEO gets fired. Right? So the thing is that this whole GPT or LLMs are built to predict the next word. तो अभी वो समझते हैं कि बेसिकली नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन मॉडल तो है, तो हाउ डू वी जनरेट नेक्स्ट वर्ड?
प्रोबेबिलिटी यूज होता है, ठीक है. व्हाट इज द अदर थिंग? सो एनएलपी एंड जनरेटिव एआई के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है वो है डीप लर्निंग मॉडल्स. तो डीप लर्निंग मॉडल्स में हम सपोज इफ यू आर गिविंग ए ट्रेनिंग इनपुट, आई वांट टू बेक, तो आई एम passing it through a language model which is nothing but a neural network. So some of you may be new to neural network, so I would not deep dive into neural network right now, but just to give you an idea ki ye is kind of an algorithm that takes an input and converts that into a numerical form, and then it gives you probability scores. Let's say in this case I got probabilities like this is softmax probability. तो softmax में क्या होता है कि हम जो probability है उसको 0 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इफ यू सम देम अप इट इज 1 बेसिकली, राइट. सो आई हैव 0.7 विच इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. तो अगर मेरे पास कैट डॉग एंड बैट है और मेरे यहाँ पे कैट डॉग एंड बैट प्रेडिक्ट कर रहा है, सपोज आई वांट टू बेक, अभी मैं यहाँ पे कैट नहीं यूज करता तो मैं केक यूज करता हूँ. आई वांट टू बेक ए केक, मे बी अ बनाना केक, राइट, और मे बी ए पेस्ट्री. ऑलराइट. तो इन दिस केस बनाना केक में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी स्कोर मिल रहा है, तो दैट इज द नेक्स्ट वर्ड. ठीक है. तो लैंग्वेज मॉडल में हम ऐसे मल्टीपल सेंटेंसेस से पहले ट्रेन करते हैं, उसके बाद जब इन्फ्रेंसिंग करते हैं तो हम न्यू सेंटेंस वी कैन फीड इन एंड वी कैन आस्क द मॉडल टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड. तो स्टेप कैसे होगा? द मैन इज वॉकिंग डाउन. सो द मैन इज वॉकिंग, based on these 4 words I can predict the next word down. The man is walking down, based on these 5 words I can predict the next word the. Based on the other 5 words I can predict the next word and so on. So actually there was a very good question asked by one of my students I was presenting somewhere. So he asked that ठीक है मैंने ये सारा चीज समझ लिया, लेकिन हाउ चैट जीपीटी वर्क्स. ठीक है. और वो मतलब दैट मेक्स सेंस, क्योंकि ठीक है आपने एनएलपी बताया, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड बताया, बट चैट जीपीटी में मैंने प्रॉम्प्ट डाला, व्हाट हैपेंस? तो व्हेन यू एक्चुअली सेंड ए प्रॉम्प्ट, that's where the inferencing begins. So it goes through that encoder decoder architecture. अभी encoder decoder architecture अगर मैं बताऊंगा तो जीपीटी तो सिर्फ डिकोडर ओनली है, इसे डिकोडर ओनली मॉडल. ठीक है. तो मैं उस डेप्थ में नहीं जा रहा हूं अभी के लिए. आई विल कीप दैट फॉर ऑल ऑफ यू टू एक्सप्लोर लेटर ऑन. बट जस्ट टू गिव यू इन अ सिंपल टर्म्स दैट ये जो जनरेशन पार्ट है ना, सो व्हेन आई आस्क की गिव मी अ कैन यू डिस्क्राइब अबाउट टाइगर, है ना, तो दैट्स ए कंडीशनिंग दैट यू पास इनटू द मॉडल. So it understand, okay, I need to find out all the contextual references that the model has been trained with wave data, and it goes to those contextual references where tiger or tiger related discussions were there. Let's say sentences or chunks or paragraphs or documents, whatever you say. These are all extracted from internet and been trained already in the model. So model has that contextual reference about tiger, right? How does it know otherwise about tiger? Now when Usama points that give me a description about tiger, when I give or when Anwar gives, in all 3 cases, we all 3 will get different answers. Right? Isn't it? So, and if you try the same prompt second time, you will get a different answer. How does it happen? Right? So basically, क्या होता है उसमें, जब the man is walking down, तो यहाँ पे जो word suppose down है, तो मैंने जो उसामा ने जो प्रॉम्प्ट डाला है उसमें मॉडल ने ये सारी चीजें एक्सप्लोर किया. उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है ये तो प्रोबेबिलिटी है, राइट. तो प्रोबेबिलिटी में ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, इसके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं. तो मान लो अगर मेरे पास 10,000 ऐसे वर्ड्स हैं और उनमें से कोई एक मॉडल टॉप प्रोबेबिलिटी स्कोर में जो वर्ड आ रहा है वो चूज किया, उसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे सपोज ये वर्ड बदल गया तो ये सारे वर्ड बदल जाएंगे, है ना, क्योंकि सारे के प्रोबेबिलिटी बदल जाएंगे. एक भी वर्ड बदला तो पूरा प्रोबेबिलिटी बदल जाएगा. तो ये क्वेश्चन था कि चैट जीपीटी में हर एक का आंसर अलग अलग क्यों आता है और व्हाई इट जनरेट्स डिफरेंट स्टफ ऑल द टाइम. दिस इज द रीजन बिकॉज इट इज यूजिंग द प्रोबेबिलिटी स्कोर
based on the previous words, it is always predicting the next word, next word, and next word, and so on. So it is able to give you a creative answer all the time. Now you can control it. उसमें बहुत सारी चीजें हैं चैट जीपीटी में, जिसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो. टेम्परेचर मतलब कितना क्रिएटिव, आप उसको जीरो क्रिएटिविटी चाहिए या फिर आप उसको फुल क्रिएटिव चाहिए. बेसिकली वो एक सेटिंग है. मैं ये प्रोबेबिलिटी नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें टॉप पी बोल के भी एक पैरामीटर होता है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं. बट कितने रैंडम वर्ड्स यूज होंगे वो हम टेम्परेचर से कंट्रोल करते हैं. ठीक है. ओके, आर वी गुड सो फार? Yep. Cool. It's going amazing. Have a time check. So I think I have few time here. So I already Okay. explained कि language models में हमने एक sentence feed किया and we are trying to predict the next word, right? Given a context. तो ये जो sentences है like where are we? This is the context. तो हम context बोलते हैं. जैसे मैंने given example share किया था कि I saw a bat. That is the context that we have given. And given a context, you try to predict the next word or next sentence or next paragraph और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट. राइट. अभी तो चैट जीपीटी ने पूरा स्टोरी लिख सकते हैं, ब्लॉग ही लिख सकते हो आप, है ना. तो टेक्स्ट जनरेशन, मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पेलिंग और ग्रामर करेक्शन, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ लैंग्वेज मॉडल. तो लैंग्वेज मॉडल का जो फंडामेंटल रूल है प्रोबेबिलिटी. सो यू हैव अ प्रोबेबिलिटी गिवन फर्स्ट द वर्ड W1 into W2 given W1 into W3 given W1 W2. जो मैंने वो पहले स्लाइड्स में दिखाया ना, the same thing it is in the mathematical form, the same thing. P of W1 given all the next words, P of W1 and W2 given all the next word. ठीक है. तो moving ahead, there are different language models that came in. तो जैसे अब सब सारे large tech companies, they have released their own models. For example, OpenAI first, they have worked with GPT, GPT-2, GPT-3, GPT-3.5, now GPT-4, and so on, GPT-4o, right? तो ये सारे releases हुए हैं over the time. तो that is by OpenAI. तो आप OpenAI के logos देखो कहाँ से आया है. OpenAI यहाँ पे GPT-4 तक आया है, अभी GPT-4o है ना, GPT-4o. तो ये OpenAI के मॉडल्स हो गए. फिर गूगल ने भी T5 से स्टार्ट करा. सपोज T5, T5, UL2, बट अब अभी जेमिनाई है. किसी ने जेमिनाई यूज किया है यहाँ पे? Yes, we have used. Okay, so if you have used Gemini and if you have used GPT-4o, you will see a huge difference, right? In the quality of the output. तो वो हमें और एक क्वेश्चन जनरेट करता है यहाँ पे कि why should we use Gemini, why should we use GPT-4o? तो डेफिनेटली क्वालिटी, राइट. सो वी नीड टू सी द मेट्रिक्स कि वो किन किन डेटा सेट पे ट्रेन किया गया है, हाउ द मॉडल हैज बीन ट्रेन, हाउ द मॉडल इज परफॉर्मिंग, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, and which are the type of questions that it is better. So there are benchmarks. We should check those benchmarks to compare different models produced by different providers. तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. मतलब आपके यूज केसेस अलग हो सकते हैं. आप OpenAI यूज कर सकते हो, आप जेमिना यूज कर सकते हो, आप लामा 3 यूज कर सकते हो. ओपन सोर्स करना है तो लामा 3 यूज करो, आप अपने कंप्यूटर में होस्ट करो. ठीक है. तो यू कैन एक्चुअली रन दैट लामा 3 इन योर ओन कंप्यूटर इफ यू हैव अ गुड जीपीयू मशीन. So you can do inferencing. You don't need to pay for tokens. Okay, moving ahead. So that kind of gives you a pretext of the things that happen in terms of generative AI and language models and etc etc. तो अब हम ये समझते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, राइट. तो वर्ड large means like more data. What we mean by is that we wanted to use large amount of data to train these models. Language, it can be English, it can be Spanish, it can be Chinese, it can be Hindi, it can be Urdu, any language, right? That's the language part. The model is GPT-2 or GPT-3 or GPT-4, basically transformers. So generative transformers are kind of has become popular after GPT. अभी वो जेमिनाई बताए या फिर वो लामा 3 बताए, सब ट्रांसफॉर्मर ही यूज करते हैं, राइट. अंडरलाइंग आर्किटेक्चर इज ट्रांसफॉर्मर.
देयर आर फ्यू मोर थिंग्स सोफिस्टिकेशन, मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ही है। तो अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल इफ यू सी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो वी हैड लैंग्वेज मॉडल्स फ्रॉम 2017 में ट्रांसफॉर्मर का पेपर आया था, वासवानी का, राइट। ट्रांसफॉर्मर पेपर हैज ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अटेंशन इज ऑल यू नीड इज द पेपर नेम। तो उसमें हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में बहुत सारा चीज देखा था। वो पेपर जो है आप चाहो तो रेफर करना, लिंक शेयर कर देंगे बाद में। बट दैट इज बेसिकली अबाउट लैंग्वेज मॉडल्स, बर्ट, एलबर्ट, there are different models that came in over the time which were like encoder only, decoder only, and from there we came into something like large language models. So models trained on large amounts of all types of publicly available data that can perform a wide variety of tasks including text, image or document summarization, classification and categorization. So these model also perform generative task. तो अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लो लार्ज मतलब कितना लार्ज, वो लार्ज एक रिलेटिव टर्म है। अभी जब लैंग्वेज मॉडल था तो उसको हम लैंग्वेज मॉडल बोलते थे क्योंकि वो 1 मिलियन वर्ड्स पे ट्रेन थे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी जीपीटी स्टार्टेड विथ लेट्स से 70 बिलियन, 7 बिलियन, बिलियन से ट्रिलियन में आ गए, जीपीटी 4 में ट्रिलियन टोकन्स में आ गए। तो अगर कल हम 100 ट्रिलियन वाले मॉडल देखते हैं तो क्या ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बन जाएंगे? रिलेटिव है, राइट? So the more amount of data we train on, the more larger the model becomes. So large matlab more data. So you can see GPT-4, GPT 3.5 अगर उसका साइज देखा जाए तो ये टाइनी है, और GPT-4 is like this big, right? Huge. Having 1 ट्रिलियन टोकन्स। तो अभी मैं टोकन के बारे में अगर टाइम मिलता है तो बताऊंगा, बट टोकन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है। Okay. वैसे तो सिंपल है, अगर मैं बोलूँ सॉ आई सॉ अ गर्ल, तो यहाँ पे 4 टोकन है, 4 वर्ड 4 टोकन। बस टोकन ऐसे नहीं डिफाइन होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 4 वर्ड, बट रफली ऐसा ही होता है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें टाइम चाहिए मुझे बताने के लिए, अगर टाइम मिलता है तो बताएंगे। बट अभी के लिए ये मान लो कि टोकन्स जो है, अगर मैं बोलता हूँ 1 ट्रिलियन टोकन्स, तो रफली 1 ट्रिलियन वर्ड्स से वो ट्रेन हुआ है मॉडल, ठीक है। तो द मोर अमाउंट ऑफ टोकन्स वी हैव, द बेटर द मॉडल इज। एंड व्हाट इज लैंग्वेज? Language matlab the human understandable language like English. It can be any other language. So there are different languages in the world, and basically English is like little bit dominating in terms of the tech world, right? So you will see most of the language models are trained with more amount of English languages, but there are different language models are also coming in different countries. They are releasing different languages where they are preferring other languages, and they are feeding in more data with that language. Okay, and what is model in large language model? So GPT-3 or GPT-4, it's a neural network. The model is the part that I said, transformer. आप उसको ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हो, आप उसको न्यूरल नेटवर्क बोल सकते हो, बट है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड न्यूरल नेटवर्क है, राइट? So what are the large language models? As I said, GPT-4 or BERT, that is the foundational model, and उन फाउंडेशन मॉडल के ऊपर ही हम थोड़ा और डेटा पे ट्रेन कर करके हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है। तो वो मॉडल्स पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। 2017 में 2017 व्हेन ट्रांसफॉर्मर केम, 2018 में बर्ट आया, और बर्ट के बाद हमने वही मॉडल्स को ज्यादा डेटा पे ट्रेन किया है। अगर देखा जाए तो हम उससे ज्यादा कुछ किए नहीं अभी तक। हाँ, देर आर थिंग्स लाइक एमओई, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज मैंने एक मॉडल ट्रेन किया जो सिर्फ चैट, जैसे चैट में क्या होता है कि 2 people आर टॉकिंग एंड आई कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ चैट्स बिटवीन पीपल, राइट? सो इट कैन बी ओनली अंडरस्टैंड, इट कैन ओनली अंडरस्टैंड चैट, सो चैट कंप्लीशन बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं हम, दूसरा टाइप का मॉडल इंस्ट्रक्ट। तो जहां पे हम बोलते हैं कि ये रहा 2 नंबर, आप इसको सम करके बताओ। तो आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया और आपको उसका सम बन के दिया। तो 2 टाइप के वेरिएंट्स जनरली बनाए, चैट कंप्लीशन मॉडल्स एंड इंस्ट्रक्ट मॉडल्स, ठीक है। अब उनके ऊपर हम स्पेशलाइज्ड मॉडल बना सकते हैं कि मुझे सिर्फ
जो है ये मॉडल सिर्फ जो है टेक्स्ट समराइजेशन में फोकस होना चाहिए, ये मॉडल मुझे सिर्फ कोडिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए, राइट, कोड जनरेशन मॉडल। तो ऐसा मैं अलग अलग मॉडल और भी स्पेशलाइज्ड एनएलपी टास्क पे ट्रेन करके बना सकता हूँ, बट फंडामेंटली सबके डेटा एंड पर जो टास्क है वो सेम है, या तो चैट कंप्लीशन मॉडल है जो बेस मॉडल है, या फिर वो इंस्ट्रक्ट मॉडल है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस? तो एप्लीकेशन जैसे डेटा ऑगमेंटेशन, सुपर रिजोल्यूशन, इम पेंटिंग, तो जैसे मुझे डी नॉइजिंग करना है, ये थोड़ा इमेज वाले मॉडल्स में आ गए हम। जैसे कि गैन्स यूज करके ना हमने बहुत सारी चीजें की है, जैसे स्टाइल ट्रांसफर। अभी मोनालिसा का फोटो लेके मैं बीच में एक आई कैन यूज समथिंग लाइक पिकासो's painting, and I can apply Picasso's painting on Mona Lisa's image. So that's called style transfer, और वो बहुत टाइम से है, मतलब ये मॉडल्स। तो जनरेटिव मॉडल्स में जैसे डीनॉइजिंग किया, या फिर स्टाइल ट्रांसफर किया, या फिर ऑब्जेक्ट ट्रांसफिगरेशन किया, या फिर सुपर रिजोल्यूशन, लो रिजोल्यूशन इमेज को हाई रिजोल्यूशन बनाए, ये सारे एग्जाम्पल्स है जनरेटिव नेचर के, जनरेटिव मॉडल्स के। बट इनके फंडामेंटल्स पे गैन्स था, गैन, जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क। एज आई सेड कि एक्चुअली मैं जनरेटिव एआई के बारे में उतना डिटेल में नहीं जा सकता हूँ जब तक मैं जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क के बारे में ना बताऊं, क्योंकि ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा फाउंडेशन है। इमेज जनरेशन में आया, लेकिन टेक्स्ट जनरेशन में हमने ट्रांसफॉर्मर से ही इवोल्यूशन देखा है। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों दोनों जो फीचर है, ट्रांसफॉर्मर प्लस गैन, इन दोनों का फ्यूजन किया, और यू सी ए मॉडल कॉल्ड स्टेबल डिफ्यूजन। अगर आपने सुना होगा स्टेबल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मॉडल्स आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर प्लस गैन, राइट? तो Right. there are more things around that, but it is not just the fusion of it. But I just gave you a glimpse of it, ki that the models are evolving over time, and the image generation models and text generation model, fundamentally they are probabilistic model that tries to generate an image or generate a text. All right, so what are the usefulness of it? Data generation, anomaly detection, image or content generation, data privacy. So अभी चैट जीपीटी को हम सिर्फ जनरेटिव मॉडल में ही यूज नहीं करते हैं, राइट? हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप 2 सेंटेंस उस पर डाल सकते हो और बोलो कि आप इसका सेंटिमेंट बताओ, तो इट कैन डू क्लासिफिकेशन ऑल्सो, है ना? अगर इफ यू गाइस हैव ट्राइड इट, इट डज क्लासिफिकेशन, इट डज जनरेशन, इट डज आइडेंटिफिकेशन। आप एक डॉग का इमेज GPT-4o में डालो एंड से कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज इट इज, इट कैन डिस्क्राइब अबाउट द इमेज, isn't it? So it understands the images. What I meant is, because a lot of people thinks that generative AI or chat GPT is just for generation, but it is able to do all kind of tasks pretty much without even training on that task. Okay, so in OpenAI text generation models, there are GPT-4 Turbo with image inputs. There are GPT-4 Turbo. So these are like the latest models that are being evolved over time. And टेक्स्ट जनरेशन यूज केसेस में मैंने बोला कि कन्वर्सेशनल एजेंट्स, सपोज चैट एजेंट्स बनाना है, या फिर कंटेंट क्रिएशन करना है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, कोड जनरेशन, पोइट्री एंड लिटरेचर, समराइजेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, पर्सनलाइजेशन. सो देयर आर n number of tasks that are being used as part of the generative nature of these models. Okay, so if you want to build an NLP application using OpenAI API, that's a different stuff. So let's say I have a PDF and I want to chat with that PDF, right? I can use ChatGPT APIs to do that. You can also use UI to upload a PDF and you can chat with it, but that basically doesn't give you a lot more flexibility. तो उसके लिए हम थोड़ा I will show you how that happens. Okay. So you actually send a request that containing the prompt or the API key, and that API key actually handles the authentication method, and then it sends a request to the hosted API, that is the OpenAI server, and then it gets you the response. So
you can choose a different type of models like GPT-4 or GPT 3.5 or DALI or TTS or Whisper, all type of models to basically interact with the hosted models. तो अभी अगर मेरे पास, if I have an API key ना, I can actually write a code and set up that API key on my environment file. And this API key actually helps me authenticate the request as a post request, let's say. So I can send a request with certain messages like you are a helpful assistant, and you provide a set of message as in command here. So now this is again going into the prompt engineering world. So this is like another deep dive into another aspect of it. So I'm not going into that too much. But let's say if you talk about simple prompt, right, when asking a question and guess based on that you are getting an answer. So you can use OpenAI API to ask questions and get the answers. So there are different large language model flavors like open source models such as open source models में क्या होता है कि आपको लाइसेंसिंग का थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस कम रहता है एंड यू ऑल्सो हैव नॉट मच डिपेंडेंसी. मतलब आप अगर want to build an application that on your hosted on your machine, or you want to create your own cloud infra and then you want to use some large language models या फिर अपने लैपटॉप में भी यूज करना चाहते हो तो you can use open source models. ठीक है. और otherwise we have proprietary models such as OpenAI, Gemini, Anthropic, Microsoft Azure, OpenAI, etc. And there are different LLM models like GPT-3, GPT 3.5, Codex, DALI, Chat GPT. So we don't need to, I already have explained, so I'm not spending more time. So I think we have some time. Yeah, but it's before time. that, I take some questions. Yeah. Yep. Sure. So basically we have our QA section जहाँ पे already started question. The SOP of questions कि आप कोशिश करिएगा students के keep your questions concise और एक बंदा एक दो पूछे क्योंकि वो जब रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो जेन्युइन क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं. So can you see the QA section? I can see. Indrajit? Okay. Yes. Let me read. So I have a question from Naseem. Generate or infer some new sentence based on previous context or reference data, that is generating AI, then traditional NLP and NLU. Yeah, absolutely. Naseem, thanks for sharing. Arham, so generative doesn't provide data from already provided data set. It takes the contextual reference from it, but it doesn't really use it directly. All right. Right. Arham, I hope that answers. Okay, I see a question from Asma. Is adversarial network somewhere relate to security risk or cyber security? No, no. It's a different model altogether that uses a technique called I would say it uses I am forgetting the term. It's called noise. Yeah. So basically, what it has, an image has actual image plus noise. So it uses the noise to basically create an image. So हम अगर ये noise बनाते हैं और उससे हम noise को हटा देते हैं तो image मिल जाता है. So basically it actually generates noise in such a way that it can actually come up with different set of images. तो वो generative adversarial network है and थोड़ा complex उसमें मुझे और time देके समझाना होगा, but मैं I try to answer. How can we, okay, which programming language is famous or easy for LLM that we need to focus? Programming language Python सबसे ज़्यादा. हाँ, ठीक है. And I have a question है, can you provide examples of how NLP has been used to improve customer service and support? NLP देखो customer service में क्या होता है कि basically जैसे chat हो गए, right, या फिर customer feedback हो गए, response reviews हो गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है. तो हम NLP को उसमें अभी तक यूज कर रहे थे, अभी जनरेटिव AI भी यूज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज चैट जीपीटी NLP? हाँ, काइंड ऑफ NLP है. एंड कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट कॉर्पस इन LLMs? तो कॉर्पस क्या होता है कि जैसे कि वेब से जो डेटा लेते हैं ना, वो एग्जाम्पल है कॉर्पस का. तो हम बोल सकते हैं एक सेंटेंस भी कॉर्पस हो सकता है, एक पैराग्राफ कॉर्पस हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट कॉर्पस हो सकता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट कॉर्पस हो सकता है, पूरा वेब ही कॉर्पस हो सकता है. तो कॉर्पस मतलब
बेसिकली जो सेट ले रहे हैं ना डेटा सेट ट्रेन करने के लिए, डेटा सेट, दैट इज द कॉर्पस. Right. ओके तैयब, हाउ टू मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ एनएलपी. तो एनएलपी जो है ना वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर ना. हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग यूज करते हैं टू सॉल्व दैट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है. बट एनएलपी मशीन लर्निंग नहीं है, एनएलपी डीप लर्निंग नहीं है. ओके मुस्तफ का मुफ्तिशा हाँ मुस्तफ सर. सो विच मॉडल्स आर बेटर बेस्ड ऑन क्वालिटी लाइक जीपीटी, जेमिनाई एटसेट्रा. बेंचमार्क, उसका बेंचमार्क है, यू कैन लुक एट द बेंचमार्क्स. Right. एंड इफ आई से डायरेक्टली आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन. मतलब GPT-4 और डेफिनेटली डूइंग बेटर देन जेमिनाई, ये डायरेक्ट मतलब एक्सपीरियंस है. मोनिका, डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन टोकेन्स एंड सीक्वेंस, बोथ आर वर्ड्स आल्सो. तो सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस वर्ड नहीं बोल सकते. सीक्वेंस जनरली एक सेंटेंस सीक्वेंस हो सकता है, 2 वर्ड सीक्वेंस हो सकता है, 3 वर्ड सीक्वेंस हो सकता है. बट हम जनरली टोकेन्स को टाइनी यूनिट बोलते हैं. तो एक वर्ड को अगर हम 2 पीस में बांटते हैं, मतलब सपोज एक वर्ड ही है कैट है और CA and T बोलते हैं, तो CA कैन बी टोकन एंड T कैन बी सेपरेट टोकन. और पूरा वर्ड भी टोकन हो सकता है और स्पेस भी टोकन है. तो राइट, सो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मॉडल्स. देयर इज एल्गोरिथम, फेमस एल्गोरिथम कॉल्ड BPE, बाइट पेयर एनकोडिंग, जो यूज होता है टोकेनाइजेशन डिफाइन करने में. बट देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स आल्सो, हाउ डू यू फाइंड अ टोकन. Okay, so next question by Mohammed. Yes, sir. How we can fine tune or use LLMs like Llama 2, 7B or other open source models in our machines in which have NA or much GPU power. If you have good GPU power, you can use 7B or lesser models. You can quantize it and OLlama बोल के एक लाइब्रेरी आता है, आप OLlama यूज करके उसको यूज कर सकते हो. ठीक है. Ushna question, I have seen medical imaging in GAN. Would you please describe how image classification task for any disease is done through GAN? As I said कि GAN इसके scope में नहीं है इस webinar के. I जी definitely बिल्कुल. need time to explain it. So तो ऐसा कंसेप्ट और उसके लिए डेफिनेटली पूरा वेबिनार चाहिए होगा. पूरा नीड webinar फॉर. चाहिए. राइट. तो हम वेबिनार कर सकते हैं उसके लिए. नसीम का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन बाय LLM लाइक 7B, 13B, 100B, 240B, हाउ इट्स डिफरेंट देन टोकन्स दैट इट कैन परफॉर्म. सो 7B मतलब 70 बिलियन पैरामीटर्स, और 70 Right. बिलियन पैरामीटर्स मतलब हम बोलते हैं कि 70 बिलियन टोकन्स ही मान लो उसको. तो हम अगर 70 बिलियन वर्ड्स लेते हैं, अब 70 बिलियन में सारे टोकन्स नहीं होते हैं, उसमें जो ऑप्टिमाइजर्स हैं, उसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन है, वो भी पैरामीटर के अंदर में आते हैं. तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि रफली 7 बिलियन टोकन्स हो गए, 70 बिलियन टोकन्स हो गए. ठीक है. Okay. Next question from Nehal. He is asking about a specific thing like accessing a foundation of data. Do we collect data first for the custom chat GPT? तो वो चीज़ें पूछना चाह रहे हैं कि chat GPT को एक्सेस करने के लिए फाउंडेशन डाटा क्या होता है? हाँ तो कैसे? नहीं, एक्चुअली इज इट आस्किंग कि कौन से डेटा पे ट्रेन हुआ है. जी. तो आई थिंक देर इज अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड फॉर GPT. आप उसको देख सकते हो. देर आर सो मेनी डेटा सेट दैट इज गिवन एज अ रेफरेंस दैट दे हैव यूज्ड. Sometimes they don't disclose, sometimes they disclose, and when they disclose they actually give you the references that the data that they have used. एक डेटा सेट है जिसे रेड पजामा, आप देख सकते हो कि बहुत फेमस है वो डेटा सेट. तो ऐसे बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल है ओपन सोर्स एंड नॉन ओपन सोर्स में, जो रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया है. Okay, Ushna question, if NLP is neither a machine learning nor deep learning, then it AI? It is AI, पार्ट ऑफ AI. NLP जो है वो लैंग्वेज पे फोकस्ड है. तो जैसे चॉम्स्की एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका मेन काम था लैंग्वेज, कंप्यूटर को लैंग्वेज सिखाना, ह्यूमन लैंग्वेज सिखाना. तो जो लैंग्वेज का जो पूरा टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एक लैंग्वेज कैसे बनती है, फोनीम्स वगैरह, और एक लैंग्वेज को तोड़ के उसको समझने का जो टेक्निक है वही NLP है. मतलब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अब उसमें हम कंप्यूटर्स को समझाने के लिए हम मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं, डीप लर्निंग यूज कर सकते हैं. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारे चीजें AI के अंदर में आ रहे हैं, बिकॉज हम ऑटोमेशन ला रहे हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स. अब हम AI यूज करके NLP का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. तो उसका एक एक चार्ट आता है, वो अगर मेरे पास रहता तो ज्यादा इजी रहता. तो एक सर्कल रहता है, उसमें
हम AI बोलते हैं, AI के अंदर में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का सर्कल रहता है, NLP भी सर्कल रहता है, बट वो थोड़ा सा टच करता है दोनों को, बिकॉज NLP यूजेस दैट, ठीक है। और NLP के अंदर में फिर LLMs आते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स आते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं वो। ओके, so Fatima question है, how these techniques are helpful or related to data analytics and data science? पूरा ही डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस है, तो हम सारे जी प्रॉब्लम बिल्कुल। सॉल्व कर रहे हैं। अल्टीमेट गोल इज टू गेट डेटा एनालिटिक्स एंड सॉल्व डेटा साइंस। Okay, Monica question for tokens and sequences to give it to a model, we first have to define max length and max word before. So my query is how to know what value we set for it. Max word. कोई पूछना ही चाह रहे हैं कि जब आप पैरामीटर्स देते हैं अपने मॉडल को, तो वो जो सीक्वेंस नंबर, मतलब एक मैक्सिमम नंबर होता है ना, तो वो किस तरह से, उसकी वैल्यू किस टोकन, तरह से? टोकन्स, टोकन्स, राइट। टोकन्स। हाँ, जी तो एक्चुअली देखो आपको जो जेनरेटिव AI मॉडल्स है, ओपन AI वगैरह, तो इट चार्जेस यू बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टोकन्स, ठीक है। तो इफ वांट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टोकन, एंड ऑल्सो इट हैज टू सपोर्ट, लेट्स से अगर उसका सपोर्ट है कि 4K कॉन्टेक्स्ट है, तो कॉन्टेक्चुअल लेंथ में इनपुट एंड आउटपुट दोनों आता है। तो मैंने पूछा कि गिव मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर, तो वो 4-5 वर्ड ही है प्रॉम्प्ट में, बट उसके जो आउटपुट है उसमें सपोज मेरे क्रॉस हो गए 400 वर्ड और 500 वर्ड, तो आपके 500 प्लस 5, लेट्स से जी 500 टोकन ही यूज हुआ, बट उसका कॉन्टेक्स्ट लेंथ 4000 तक है। बट ऐसे सिनेरियोज में मुझे 4000 से ऊपर जा रहे हैं, तो आई नीड बिगर मॉडल्स लाइक एंथ्रोपिक जैसे मॉडल्स, 200K कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, तो आप 200K तक टोकन्स और वर्ड जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स द आइडिया हियर। हाँ, Yep, I any think other you have question? almost answered all the possible questions. Okay, great. So I think I thank you everyone, and hope you guys enjoyed this session. There's the last question from the, so how text next sentence prediction NSP is used in language modeling, and what are some of the tools for Yes. NLP? The NSP is used in BERT, right? NSP is the core fundamentals behind BERT architecture, which is another language model. And next sentence prediction is basically based on, let's say, previous sentence, you are able to predict the next sentence. It's the same principle, just जी the name is different. For word prediction, which topics of probability should we cover? Basic probability. You don't need to go too 7th much. 8th की math, like the probability still we are using. हाँ, तो वो एक उसामा, एक बंदा था, तो उसने बोला कि he worked in as a scientist, as a mathematics scientist, and that's why he's जी interested in data science. So I said, in data science you need pinch of salt के बराबर आपको maths चाहिए. तो you don't need to be mathematics scientist to become a data scientist. हाँ, but बिल्कुल। आपको अगर पता है, it's an advantage. Yep. So I think I think we are on time. yes, we have completed on time. Thank you so much, Indrajit. Yeah, आपने it's great. Yeah. All right, I'll stop sharing, and thank you so much. No, thanks for the opportunity, and I hope the audience also enjoyed this session and they have a good learning today evening. Yeah, right. thank you. Yeah, Indrajit, it's been quite impressive, and the whole session was quite interactive. And being a student of data science and AI, I would say personally कि चीज़ें इतनी simple थी कि I was like just dreaming of that thing कि हाँ सारी चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं. So it's been great having you on board, and hope our students also enjoyed this session. And thank you once again, Indrajit, Osama, thank you so much. And our other panelists, Naveed and Naveed Munib has also joined us. So thanks once again. Till the next session, we hope, Indrajit, that we would have you once again. We will bother you Inshallah. once again to have a great session with us. And if you have last few words, Osama, you may say. Yes, मैंने इंद्रजीत के साथ आई स्टार्टेड वर्क बैक इन 2021, एंड उस वक्त मैं सीख रहा था, एंड आई स्टार्टेड माय एनएलपी जर्नी फ्रॉम इंद्रजीत. आई लर्न अ लॉट, एंड उस टाइम से आई एम फैन ऑफ हिज सिंपलिसिटी. जो इतना आज भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ अबाउट जेनेटिव एआई, एलएलएम मॉडल्स, एंड very simple he explain everything. Thank you, Indrajit, for giving us time and for our students. Thank you, Sama, and thanks for sharing this opportunity. And I really loved sharing some of the knowledge, whatever I know. And yeah, thanks for being here.
All right. Thank you. Yeah, Thank just a closing note. Indrajit, can you please just share from your personal life just one inspiration to give to the students, that what inspiration they can get, and if they are just uh, chasing their dream to get into NLP side or data, that then what they should do to keep up the motivation. मेरा एक बहुत ही मैं जनरली बोलता हूँ, एक्चुअली देयर आर सो मेनी पीपल कम्स इन डेटा साइंस, और मैं उनको ये पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्यों डेटा साइंस करना चाहते हो। तो बहुत सारे बोलते हैं कि उनको ज़्यादा अर्निंग चाहिए या फिर बेटर जॉब चाहिए। मैं बोला देखो ये सब तो ठीक है, बट व्हाट एग्जैक्टली एक्चुअली ड्राइव्स यू? तो वो जो इंटरेस्ट है आपका, आपको अगर मैगी भी बनाना है ना, आप देखो एक मैगी वेंडर जो है वो स्ट्रीट पे फेमस हो जाते हैं, वो घर पे सब मैगी खाते हैं, लेकिन उनके पास भी जाके लोग खाते हैं क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग इट वेरी वेल। तो मैं, मेरा कहना है अगर आप डेटा साइंस ही करते हो या फिर आप डेटा साइंस नहीं करते हो, जो भी करते हो उसको अच्छे से दिल से करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस। तो चाहे डेटा इंजीनियरिंग करो डेटा साइंस, तो आपको वो पहले ढूंढना है कि आपको इसमें मजा आ रहा है। और देखो उसमें भी ऐसा टाइम आएगा व्हेन यू डोंट लाइक, मतलब आप वो मैगी बनाने वाले से पूछो, उसको शायद मैगी नहीं पसंद है लेकिन वो बनाता है और उसको सक्सेस भी मिल रहा है। तो आपको भी सक्सेस मिलेगा, आपको डेटा साइंस नहीं भी पसंद आएगा, ऐसे भी टाइम आएंगे जिसमें अरे यार गिव अप कर देते हैं। लेकिन बेसिकली बेसिकली आपको वो सारी चीज़ों के साथ यू हैव टू गेट दैट इंटरेस्ट। तो अगर आपका मोटिवेशन मनी है या फिर जॉब प्रोफाइल है तो वो कुछ दिनों बाद चला जाएगा, बट आपका अगर मोटिवेशन लर्निंग है एंड टू हैव गेट गेट गुड एट इट, तो वो तो लाइफ लॉन्ग है, बिकॉज देयर इज नो एंड। Exactly. Yep. Thank you so much once again, Osama, Indrajit, Naveed. Thank you so much once again. We are just signing this session off with the hope that once again we would be together on this collaborative, great learning session. And thank you, everyone. Take care. Thank you, Good everyone. evening. Bye. Bye. Yeah.